Hello guys and girls, you are listening to RajKrSingh, our series of lectures on quantum mechanics, and today's lecture is on Wkb approximation. This is the third lecture in this series of Wkb approximation, and in the first two lectures we have already dealt upon the theoretical foundation of this approximation method, and in the second lecture we have discussed about the condition of validity, and we have explored three different cases of potentials with no walls, with one wall, and with two walls. Now in this lecture we will discuss basically one of the application of Wkb approximation to a one-dimensional problem, particularly particle in a one-dimensional box. But before going into details of this, let us have a summary of this approximation. We have already discussed this in the part 1 and 2. Those who have not listened to my previous lectures before going through this lecture are requested to go to the previous two lectures to have a seamless understanding and the flow of the concept in this particular series of WKB approximation lectures. So I welcome you all once again. Now, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं WKB approximation मेथड जो है इसको यूज करके हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वन डायमेंशन में उस इक्वेशन का एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं. वैसे भी नाम है WKB approximation and this is one of the approximation method in quantum mechanics. And secondly, इस मेथड का यूज करके हम लोग टनलिंग रेट्स फाइंड कर सकते हैं थ्रू अ गिवन पोटेंशियल बैरियर, and we can also calculate the bound state energies. Now, WKB approximation को कहाँ पर यूज करते हैं? WKB मेथड को वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर पोटेंशियल is a slowly varying potential. That means ये वैसे सिस्टम में एप्लीकेबल है जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि सिस्टम के किसी एक पैरामीटर के साथ पोटेंशियल वैरी करता है. ऑफ कोर्स उस पोटेंशियल के वेरिएशन पर भी लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जो वेरिएशन का जो ऑर्डर है इट इज लिमिटेड अप टू द फ्यू ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द सिस्टम. और शायद ये भी एक रीजन है कि इसको हम लोग सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं. नाउ यहाँ पर दो सिचुएशन आते हैं. एक सिचुएशन वो है जिसमें भी आर कांस्टेंट है, और दूसरा सिचुएशन वो है जिसमें भी आर कांस्टेंट नहीं है. ये पर्टिकुलर मेथड वहाँ एप्लीकेबल है जहाँ पर भी आर कांस्टेंट नहीं है. ना इस सिचुएशन में भी तीन सिचुएशन है. जब भी आर कांस्टेंट नहीं है उस केस में भी तीन सिचुएशन है. नंबर 1, व्हेन द पार्टिकल्स एनर्जी E इज लेस देन V. नंबर 2, व्हेन पार्टिकल्स एनर्जी E इज ग्रेटर देन V. एंड नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस अप्रोक्सीमेशन में, व्हेन पार्टिकल्स एनर्जी E इज इक्वल टू V. इन तीनों डिफरेंट केसेस के रेस्पॉन्स जो है डिफरेंट है. लेट अस समराइज व्हाट हैपेंस इन ईच केस. नाउ when VR is not constant but it varies slowly over certain de Broglie wavelength, then solution for the wave function, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले, these are the rapid oscillations modulated by gradual change in the amplitude and wavelength. Now, when potential is constant but energy is less than V, then the particle wave function has this form: psi r equal to a exponential bracket plus minus p dash dot r by h cross, where this p dash r is imaginary and is equal to square root of 2m vr minus e. That means the wave function in this case is also sinusoidal, but here the amplitude and wavelength both change with r. Now in this special case, when E is equal to V, then we say that potential is not slowly varying with lambda. This lambda equals to 2 pi by P. Now since this P is 0 because E equal to V, so the difference E minus V becomes 0. So in this case lambda becomes infinite and the potential momentum vanishes.
सो ये वैसे पॉइंट है जिस पॉइंट पर मोमेंटम वैनिश करता है और वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाता है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, बिकॉज at this point particle stops momentarily and then turns back to resume its motion once again in the opposite direction. Now allowed region वो region है जिसमें E greater than Vx है, that means वहां पर potential जो P है that is positive, and the general solution giving the propagation of wave is given by this expression psi x equal to a by root over kx and this exponential term plus b by root kx and then this exponential term. यहाँ पर दो term है, one is for the right going wave and the other one is for the left going wave. Now in the forbidden region E is less than Vx, that is less than E minus Vx is less than 0, और इस केस में जो momentum है that becomes imaginary and we write px equal to I times kx and kx is real. And again the general solution will be psi x equal to c by root over kx and the exponential term, and again plus d by root over kx and the exponential term. इस एक्सप्रेशन में जो कि e लेस देन v का केस है और इस एक्सप्रेशन में जो कि e ग्रेटर देन v का केस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इमेजिनरी टर्म है और इस एक्सप्रेशन में इमेजिनरी टर्म नहीं है, बिकॉज मोमेंटम इज इमेजिनरी ऑलरेडी. सो दिस वे वी हैव एक्सप्रेशंस फॉर द टू केस, वन इज द अलाउड रीजन एंड द अदर वन इज द फॉरबिडन रीजन. तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग तीन डिफरेंट रीजन्स की बात कर रहे हैं. एक अलाउड रीजन है जिसमें E ग्रेटर देन Vx है, और दूसरा है फॉरबिडन रीजन less than Vx है, E less than Vx है. तो already we have seen in this case of Wkb approximation that we have these three cases. One is the allowed region, the other one is the forbidden region, and the third one is basically for the determining the turning points in the potential. So this is recapitulations of the Wkb approximation so far we have done. एक बार यहाँ फिर से मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जो पोटेंशियल वेल विथ वन रिजिड वॉल, टू रिजिड वॉल और नो रिजिड वॉल का कॉन्सेप्ट है, ये रिजिड वॉल का कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है जिसके बियॉन्ड पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट, एंड द अलाउड रीजन्स एंड द फॉरबिडन रीजन्स ये डिसाइड किए जाते हैं पार्टिकल का जो इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है या कम है, और जो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स है ये वो पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं और पार्टिकल वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर केस ऑफ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स. सो कंसिडर a spinless particle of mass m moving in one-dimensional box with walls at x equal to 0 and x equal to L. x equal to 0 और x equal to L पे wall है, and we wish to determine the quantized energy levels of the particle using Wkb approximation. So देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि there are walls at x equal to 0 and x equal to L. That means particle inside the box will be reflected from these walls and move in the opposite direction. यानी कि ये जो walls का केस है, this is the case of potential well with two rigid walls. तो हम लोग यहाँ पर potential well with two rigid walls के जो expression है quantization condition का, उसको use करेंगे. So once again, since this is the case of potential with two rigid wall, one is at x equal to 0 and the other is at x equal to L, so we will use the quantization rule, that is integral x1 to x2 px dx equal to n pi h cross, where n equal to 1, 2, 3 and so on. और फिर से एक बार याद दिला दें आपको हम कि ये जो इंटीग्रल है px dx, बल्कि क्लोज इंटीग्रल px dx जो होता है, that represents the area of the contour in this position and momentum phase space. Now
Momentum of the particle at point x expressed as function of E, P function of x and E is equal to root over 2me. इस एक्सप्रेशन को वापस हम लोग यूज करेंगे in expression for the contour integral. So we will get integral 0 to L square root of 2me dx, that is equal to n pi h cross, and from here root over 2me and this dx integrated over 0 to L gives L when the limits are used equal to n pi h, and from here we have E equals to pi square h cross square n square by 2ml square. And in fact this is the exact value of the energy of particle in one dimensional box. हालांकि ये approximation method है, लेकिन one dimensional particle in a box के केस में we are getting exact solutions for bound energy levels. So this way we have discussed about one dimensional particle in a one dimensional box and applied Wkb approximation to get the energy levels. So this way finally we have seen how Wkb approximation is based on the case where the system potential varies with certain parameter. Normally it used to be the one dimensional parameter along one direction, say along x-axis. So and how the different cases of allowed region, forbidden regions and the classical turning points appear, and how the expression for the wave function is obtained in the three different cases, and how it is different in case of allowed region and in case of forbidden region. So this way we come to an end of our today's discussion on one of the application of Wkb approximation that was addressed to particle in one dimensional box. In our next lecture we will take up the case of tunneling effect, and we will obtain expression for transmission coefficients or the tunneling coefficients for the given potential, where remarkably the potential will be varying with respect to a given parameter, that is the basis on which Wkb approximation is based on. Thank you so much for watching this video and see you in the next lecture. Thank you.